Good morning, team. GST collection is almost 1.5 lakh crore in December, which is higher by 15% year-on-year basis and higher 2.5% month-on-month basis. In the last 10 months, we have been more than 1.4 lakh crore, which is in itself a very big achievement. Navakar Corp has got approval from Western Railway for commissioning of Gadi Shakti multimodal cargo terminal of Vardarkar. It is near Ahmedabad division. India's electricity consumption grows 11% to 121.19 billion unit in December. It is not only the growth, there is a deficit also. So this argues very good for power companies, Torrent Power, Tata Power, NTPC, all these power companies, NHPC, these companies will benefit from these deficit. Even NLC, the National Lignite Corporation, Indian employment rate rises to 8.3% in December, highest in 16 months. That is what CMIE data says. In the data, one more unique point is urban employment rate has increased to 10.09% from 8.96%, whereas rural unemployment has reduced from 7.55% to 7.44%. HG Infra has been declared as L1 bidder by Delhi Metro Rail Corp. DRMC estimated project of 398 crores. It is for 3.51 kilometer. Construction period is 24 months. Shriram Finance has secured a long-term funding for $100 million from Asian Development Bank 5-year loan under Social Finance Framework. Previously also, Shriram Finance has raised capital about 250 million from US Development Finance Corporation and 475 million through a 144A bond from international market. L&T Finance has sold 1,827 crores of distressed loan to Avenue Capital backed ARC, CRISIL. This is ET report, and JSW Steel is considering a foray into manufacturing of EV, four-wheeler EV. That is what Live Mint has said. And even Torrent Power, we talked about it. Torrent Power is also a Live Mint news, so it is not in public domain. Religar Enterprise Finvest signed settlement agreement with all lenders for one-time settlement. Almost 16 lenders are there, and the haircut is above 50%. Dollar Industries is entering a joint venture with Mohit Moore and Chetan Chaudhary to manufacture rainwear and all allied products. Aster DM Healthcare, it is a hospital stock. It has entered into a hospital operation and management agreement with Verita Hospital Private Limited for operation and managing G. Medegonda Super Specialty Hospital, Mandya, Karnataka. So it has 100 bed with them. So with this, Aster DM will become 4,380 beds, and this agreement is for 15 years and a lock-in period of 5 years. So I think this is likely to be positive for the company. Kalpataru Power receives new order worth 1,247 crores. This order includes India and overseas T&D business, and the total order for FY23 has crossed 17,031 crores on consolidated basis. VRL Logistics has sold bus transport business to Vijay Anand Travel Private Limited on some slump sale basis on a going concern basis for 230 crores, for which they have received 225 crores. And the bus will be operated now from 1st of January in the name of Vijay Anand Travels.
steel type wheels as prepaid long-term debt of 81 crores, and now the long-term debt stands at 270 crores. Skipper wins a new order for 2,570 crores from BSNL 4G telecom project to be executed in 5 years. It will be a major portion will be from Rajasthan, which is 1,350 crores, and from Orissa 1,220 crores, and almost 3,350 towers also. The tower development also will be included in this project. Positive for Skipper, but we don't track skippers. With this, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी एक कॉल को हम लोग एक बार हिंदी में कर लेते हैं. फ्यू ऑटो कंपनीज के नंबर्स आए थे, दिसंबर सेल्स नंबर्स. उसमें मारुति सुजुकी है, उन्होंने टोटल डिस्पैच जो हुआ है वो फॉल हुआ है 9% से ईयर ऑन ईयर, क्योंकि उनके जो लोअर सेल थे स्मॉल कार के उसके वजह से, और लिमिटेड प्रोडक्शन था शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स के वजह से. टाटा मोटर्स के जो सेल्स थे वो राइज हुए 14% से, और उनका जो ओवरऑल पीवी इंडस्ट्री है वो रिवर्स डिमांड में है नेक्स्ट क्वार्टर में. देन टू व्हीलर सेगमेंट में आयशर मोटर है, उन्होंने टोटल मोटरसाइकिल सेल है उनका वो फॉल हुआ है 7% से ईयर ऑन ईयर, और उन्होंने जो डिस्पैच के प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें भी स्टीपली फॉल देखा गया 36% का. इन सीवी सेगमेंट हम लोग देखें तो सेल्स ऑफ स्कॉट जो है और आयशर है वो अप है 18% से अप्रॉक्स. तो इम्प्रूव हो रहा है यूटिलाइजेशन और पिकअप हो रहा है रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कारण, और उनकी जो डिमांड है रिकवरी एमएचसीवी में वो भी है, इवन सीवी एक्सपोर्ट भी है. तो ये नंबर्स आए थे. नेक्स्ट अपडेट है एनएमडी से है, उन्होंने आयरन ओर जो प्राइजेस है वो हाई किए ₹600 टन $7 पर टन से, जो इफेक्टिव होगा आज से. और उनकी जो हाइक प्राइस है वो ओडिशा में आयरन और प्राइजेस है, और उनका जो सर्ज हुआ है पैलेट ऑफर्स उसके कारण इम्प्रूव एक्सपोर्ट हुआ है. और जो बुकिंग है वो की फैक्टर्स में प्राइस हाइक की वजह से बिहाइंड है. नेक्स्ट अपडेट है आईटी प्रीव्यू के ऊपर. हम लोगों ने आईटी का प्रीव्यू रिलीज किया, उसमें Q3 जनरली हम लोग को वीक क्वार्टर लग रहा है, क्योंकि आईटी कंपनीज है उसमें हायर फोरलॉक है, और हम लोग बिलीव करते हैं कि जो माइक्रो चैलेंजेस हैं जो फर्दर वीकनेस होंगे, जैसे कि वो मॉर्गेज है, हाईटेक है, लग्जरी रिटेल है, और स्लो डाउन इन 5G कैपेक्स के ये सारे वर्टिकल्स में हम लोग को वीकनेस दिख रहा है. उसके अलावा भी यूरोपियन रीजन और डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है वो हम लोग थोड़ा सॉफ्ट देखने मिल रहा है, एक्सपेक्टेड है. तो ये सारे फैक्टर्स के वजह से जो रेवेन्यू अक्रॉस है आईटी कंपनीज में वो सबड्यू ही होगा, और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि जो लार्ज कैप कंपनीज है वो रजिस्टर करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर बिटवीन 0.7 से लेके 2.8 में इन सीसी टर्म्स में, और वो अप टू 100 बेसिस पॉइंट्स क्रॉस करेंसी टेलबैंड होगा. और मिड कैप में हम लोग रजिस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनीज रजिस्टर करेंगे ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ जो रेंज होगी -5% से +5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन सीसी टर्म्स में, और क्रॉस करेंसी बेनिफिट होगा अप टू 20 बेसिस पॉइंट से. तो ओवरऑल हम लोग गाइडेंस फ्रंट्स में देखें तो इनपी के जो रिवाइज रेवेन्यू गाइडेंस होगा फाइनेंशियल ईयर 23 में और अपवर्ड होगा 50 बेसिस पॉइंट से, और विप्रो का जो गाइड होगा वो 0 से लेके 0.2 के रेंज में होगा. ओवरऑल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इनपी और विप्रो आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप में, और मिड कैप में सैंट और एलटी एंड माइंडट्री आउट परफॉर्म करेंगे. जेंसर हमको लग रहा है कि अंडर परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट अपडेट है जेंसर टेक्नोलॉजी के ऊपर. जेंसर के जो उन्होंने अनाउंस किया कि उनके जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे अजय भुट्टोरिया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, और अभी मनीष टंडन उनको रिप्लेस करेंगे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. और मनीष टंडन है, उनको 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें उन्होंने एसोसिएट किया था एनपी के साथ 20 इयर्स, वहाँ वो लेड करे थे हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स में. तो ये एक जेंसर के लिए बेनिफिट रहेगा, और उनके एक्सपीरियंस से वो टर्निंग अराउंड होगा कंपनी के लिए, और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वो कंपनी में लाएंगे. देन नेक्स्ट अपडेट है इंडियन ओवरसीज बैंक है, उनके जो सेंटर है उन्होंने अपॉइंट किया अजय कुमार श्रीवास्तव को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक में.
और वो इफेक्ट होगा जनवरी 1 2023 से। देन नेक्स्ट अपडेट है क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर। क्रेडिट ग्रोथ का जो मोमेंटम नवंबर मंथ में है वो अभी 17.6 से ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपेयर करेंगे तो अक्टूबर मंथ में लास्ट टाइम 18.3% था। और अभी हम लोग सर्विसेज सेगमेंट में देखेंगे तो रिटेल लोन है और इंडस्ट्री ग्रोथ है वो डाउनटिक विटनेस किया है नवंबर 2022 में। और रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो है कंज्यूमर ड्यूरेबल का वो 51.2 है नवंबर 2022 में, जो अक्टूबर 2022 में 57.1 था। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो भी हम लोग देखें तो 25% है नवंबर में, जो अक्टूबर 2022 में 28.4% था। उसमें भी हम लोगों ने देन नेक्स्ट एडवांसेस और एनबीएफसीज जो है उसमें भी स्लो डाउन देखा गया है नवंबर 2022 में। तो ओवरऑल हम लोग को बैंकिंग सेगमेंट में हमारे जो टॉपिक्स है उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक है। देन नेक्स्ट अपडेट है पंजाब सिंध जो बैंक है उसके ऊपर तो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है कि 250 करोड़ का जो रेस करेंगे नेक्स्ट 12 मंथ में। और ये जो फाइनेंस रेज करेंगे वो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड जो बेस 3 कंप्लेंट बॉन्ड्स होंगे उससे। देन नेक्स्ट अपडेट है प्लेस्टी बेंच जो इंडिया है उन्होंने अचीव किया ऑल टाइम उनका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ऑपरेशंस है 9 मंथ्स जो एंडेड होंगे 31 दिसंबर 2022 में अप्रॉक्स 570 करोड़ का किया है क्वार्टर 3 में और वो 186 करोड़ है। देन टोरेंट फार्मा है वो टॉक मतलब वो उनके भी मतलब जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है रिन्यू एनर्जी का उसमें टॉक में है वो ग्लोबल 1.1 गीगावाट प्रोजेक्ट है और उसके जो वैल्यू है एंटरप्राइज वैल्यू है $1.2 बिलियन है और उन्होंने सबमिट किया है नॉन बिडिंग ऑफर और उसका जो इक्विटी वैल्यूएशन है वो अराउंड $450 मिलियन है। और ये टोरेंट फार्मा का 1.1 गीगावाट एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। देन सुप्रीम पेट्रोकेमिकल है उनको रिसीव हुआ है परमिशन एमपीसीबी से जो पॉलिस्टरीन एंड एक्सपांडेड पॉलिस्टरीन कैपेसिटी एक्सपांशन प्रोजेक्ट होगा रायगढ़ में और ये इंक्रीज होने के बाद 36% से इंक्रीज होगा और वो 3 लाख एमटीए होगा और उनका जो ईपीएस है वो स्टैंड होगा इंक्रीज होकर 70% से 85,000 एमटीए। देन जो ऑयल मेकिंग कंपनीज है ओएमसीज है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल उन्होंने जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो प्राइसेस है वो हाइक की है 25 से और जो इमीडिएट इफेक्ट से होगा तो ये उसका जो एजेंसी है वो एक्सपेक्ट करे कि इंडस्ट्री गेन होगा क्वार्टर 3 में। देन नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक अमेंडमेंट मेक किया है और वो एमओए है जो ऐड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज है बिजनेस सर्विसेज में। देन जीएसटी के नंबर्स आए थे। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1.5 लाख करोड़ के अराउंड है जो 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और मंथ ऑन मंथ 2.5% से जो लास्ट 10 मंथ का अराउंड हम लोग ईयर ही 1.4 लाख के ऊपर ही रजिस्टर कर रहे हैं तो ये एक बिग अचीवमेंट है। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडिया का जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो 11% से इंक्रीज हुआ है और जो डेफिसिट है वो भी अच्छा खासा हुआ है। तो ये जो पावर जैसे कंपनीज है उनके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। उसमें एनएचपीसी है, टाटा पावर है, एनटीपीसी है, एनएलसी है, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। देन एचजी इंफ्रा जो कंपनी है उन्होंने बीट किया है दिल्ली रेल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए और उसकी जो वैल्यू है वो 398 करोड़ है और जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 24 मंथ का होगा। देन श्रीराम फाइनेंस है उन्होंने सिक्योर लोन $100 मिलियन के अराउंड कुछ 5 इयर्स के लिए सोशल मतलब सोशल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के लिए लिया है। उसके पहले भी कंपनी ने लोन लिया था। देन नेक्स्ट अपडेट है एलएनटी फाइनेंस है उनको कुछ 1817 करोड़ कुछ रिसीव जो लोन है उन्होंने एवेन्यू कैपिटल को लोड किया है। देन नेक्स्ट अपडेट है एस्ट्रोडीएम हेल्थ केयर है वो एंटर कर रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज जो लीलावती हॉस्पिटल है कर्नाटका में वहां में अभी वो 100 बेड्स ऐड करेंगे। तो अभी ये ऐड करने के बाद कंपनी के पास 4083 बेड्स रहेंगे और ये जो अग्रीमेंट है वो 15 इयर्स के लिए रहेगा और जो 5 इयर्स है वो लॉक इन पीरियड रहेगा। देन डेलीगेट इंटरप्राइज है उन्होंने एक वन टाइम सेटलमेंट अग्रीमेंट साइन किया है 16 लेंडर्स जो फुल फनल सेटलमेंट था जो विद
स्टैंडिंग जो है सब्सिडरी रेलिगेयर फिनइन्वेस्ट है, और एनबीएफसी जो है वो रिमूवल जो करेक्टिव प्लान है उसमें इम्पोज करेंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट अपडेट है कल्पतरु पावर को भी एक ऑर्डर मिला था, जो उसके बाद टोटल फाइनेंशियल ईयर 23 में कुछ अराउंड 17,031 करोड़ का कंसोलिडेशन बेसिस पे है। देन श्रीराम फिनांस को क्रिसिल का जो रेटिंग है उसमें क्रिसिल ए रेटिंग से कंपनीज का लॉन्ग टर्म डेप्थ है, और क्रिसिल ए प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है न्यू फ्रेम में। देन एचजी इंसान को जो इंजीनियरिंग लिमिटेड है उनको बिल्डर दिल्ली मेट्रो से रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रोजेक्ट मिला था, वो 399 की करोड़ की वर्थ है। और जीएसडब्ल्यू ग्रुप है जो जिंदाल लेट कॉन्ग्लोमरेट जीएसडब्ल्यू ग्रुप है, वो मतलब एंटर कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ये कुछ उनका ऑफिशियल जो टॉप ऑफिशियल है उनसे ये अपडेट आया है। Technical derivatives update. If we see on Friday's trading session, NIFTY opened on a stronger note. It rallied toward 18 to 65 levels, but that also that being a hurdle and index retraced from those levels. That was in 50 SMA level, and index retraced and was down by 85 points by the closing session, and it was barely managed to hold 18,100 levels. So if you see on the sectorial front, and FMCG, banking and pharma witnessed profit booking, while on the positive side, metals and PSU bank were showing strength over here. So technically, we believe that as long as Nifty does not move over 18,300 levels, fresh longs or fresh positive momentum would be missing and would be trading in a range. And in the range of 17,800 to 18,100 marks should be the ideal zone over here. And secondly, if we see the averages and oscillators are also on the slightly on the negative side, so that will also indicate that we would be stepping towards 18,000 zones and 17,800 levels. So profit booking would be there, and that could be an opportunity to add longs near 17,800 zones also. Secondly, on the Bank Nifty side, Bank Nifty also witnessed profit booking from the higher level. It hit 43,500, but it retraced and closed below 43,000 levels. So slightly a negative side on the Bank Nifty also. So Bank Nifty is also trading in a range bound only move. So 42,000 would be 42,000, 41,500 would be the base over there. And on the higher side, if it does not take 43,600, so further fresh momentum would be missing in that too. So on the derivatives front, if we see, then we witness a long liquidation to the tune of 80% and total outstanding stand is 11.66. PCR also saw a downtake from 1.16 to 0.88, and we are trading below 1 and that too. Similarly, in the Bank Nifty PCR also, Bank Nifty PCR dropped from 1.5 to 0.8 levels. And in the options front, if you see, the media additions were there in the put option in 18,200 strikes with the addition of 4.32 and 4.44. And in the call front, if we see, then 18,200, 18,300 now will be acting as a hurdle with 7.96 and 6.68 billion shares. Similarly, in the Bank Nifty, put options like 42,500 and 42,000 will be acting as a base and a cushion for the index. And on the call side, if we see 43,000, 43,500 and 44,000 would be acting as a hurdle for them. On the data front, if you see, then FIs were again reduced their position by 13,600 contracts. So now they are net long by 1,000 contracts only. So long short ratio stands at 50%. In the cash market, if you see in the Friday trading session, they sold to the tune of 3,000 crores, and DIS bought to the tune of 2,266. And on the month-on-month figure, see, then after 1 month of buy, again they were net sellers by 14,231 contract, and DIS bought to the tune of 24,159 contract. And if we see on the weekly basis, the sectors that were positive side were the PSU banks and metals, and we think that this would be again continuing for those two metals. In metals, we like Tata Steel and SAIL over here. And in the other stocks like fertilizer stock can be also in focus like Sharda Crop, RCF and Petronet. And on the secondly, on the losing side, if we see the IT media were the top losers, so they would be again feeling the pressure over here. So yeah, that's it from my end, and hello, hand over to Vishal sir for more updates. Thank you. Yeah, good morning, sir. Good morning, team. To start off with, first auto companies have reported numbers yesterday, and few of them they were reported. To start off with, in passenger vehicle, Maruti total dispatches has fallen by around 9% on Y&Y basis due to lower sales of small car, and there's a limited production due to shortage of semiconductor, which means things will improve in terms of volume for Maruti Suzuki in the coming month. Sales for Tata Motor rose 14%, and it expects that overall PV
CV industry to continue to witness robust demand in the next quarter. That is for Tata Motors. In two-wheeler, Eicher Motor total volume, total motorcycle sales fell by 7% on Y-on-Y basis, as the dispatches in the premium category has fallen sharply. In CV, sales for Escort and Eicher were up by 18% on Y-on-Y basis, and on the back of improved fleet utilization and pickup in road construction, and the demand recovery in MHCV. However, CV exports, they have remained subdued. So just to conclude with, CV in this last month numbers, they have been pretty good. In PV, it has been mixed bag with Tata Motors up and Maruti Suzuki, they are in the weaker side. And we'll update more on the two-wheelers number when they are published today. Next is on cement. So cement volume has been reported at an all India level. For the month of November, the volume growth was pretty strong at around 28% on Y-on-Y basis. Though there is a base impact, but having said that, I mean, what we understand is like pretty strong sort of volume growth augurs well for the cement company when they start reporting numbers. The fuel cost has been a bit on the weaker side, so that augurs well for cement companies. So we retain our preference for UltraTech in the cement sector. Next is on metal side. So NMDC has hiked iron prices by around 600 rupees a ton, which is effective today. And overall, this is positive. The hike in Odisha iron prices and surge in pellet offers improved export booking, which basically augurs well for an MDC. Next is on IT sector. So IT sector, we have released a preview. So what we are saying in that note is Q3 is generally a weak quarter for the IT company due to higher furloughs. We believe macro challenges are leading to further weakness in verticals like mortgages. In terms of stock specifics, we are expecting in mid-cap, Cyient and Gensa to report improved margins expansion. However, L&T, Mindtrain, Birlasoft, they're expected to see a softness. Company specific, we are expecting Infy and Wipro to outperform in large cap, and among mid-cap, Cyient, L&T to outperform. Gensa too, we are expecting underperform. Though I mean in terms of we are expecting a margin expansion, but given the valuation and things, so we are expecting Infy, Wipro to be better bet in the large cap, and just to reiterate, Cyient and LTI, Mindtrain in the mid cap. Next is on in terms of news flow. So Gensar has announced resignation of its CEO and MD, Mr. Ajay Bhuturia. He will be replaced by Manish Tandon as an MD. Mr. Tandon, he has a 27 years of experience, out of which he is associated with Infy for 20 odd years in a couple of verticals like healthcare. We believe Gensar would benefit from Manish Industry Connect and his experience of turning around the companies. Next news flow is on Indian Overseas Bank. So the center has appointed Mr. Ajay Srivastava as the MD and CEO of the Indian Overseas Bank effective January 1st. In terms of his background, he was for a long period of time he was associated with Allahabad Bank, and then last he was AD in Indian Overseas Bank only. So this augurs well, which basically appointment of Mr. Srivastava. Next and last thing from my side is on the banking sector. So we have released our product a PDF note on credit sector growth. Now, if you look at the credit growth momentum has moderated in the month of November. It is up by around overall, I mean, not a major moderation, but 17.5% on Y-on-Y basis. The growth is there, which is as compared to 18% kind of in the month of October. In terms of segment wise, services, retail, loan, as well industry credit growth has witnessed a marginal downtick in terms of the November month. The retail credit portfolio, consumer and durable credit, they continue to be on the upside. Even if you look at the credit card portfolio, it was up by 25% on month Y-on-Y basis in the month of November. The advances to NBFC as well HFC also slowed down in November, and it stood at 33% and 16%. Deposit growth saw an uptake on which is like 24 basis on fortnightly basis and stood at 9.9%. Now, if you look at in terms of our recommendation in terms of sector, so any weakness, I think we will see in we'll be possibly buying HDFC Bank, which is like fast revival post normalcy, ICICI Bank, and in terms of mid and small, Federal Bank and City Union Bank. So that's all from my side, and I'll hand it over to team. Over. Good morning, everyone. There are a few more news updates from my end. Punjab and Sindh Bank, the board has approval raising 250 crores within the 12 months time frame via equity shares or by base 3 compliant bonds.
Next is on Plastic Bends India. They have achieved all-time high ever revenue from the operations in the last 9 months, ended 31st December 22 of approximately 570 crores and a Q3 at rupees 186 crores. Next is on Torrent Power. They are in talks to buy clean power projects from Renew Energy Global, 1.1 GW projects, which is valued at enterprise of $1.2 billion. They have submitted a non-binding offer at an equity valuation of $450 million. Next is on Supreme Petrochem. They have received a permission from the MPCB for polystyrene and expandable polystyrene capacity expansion project at Raigad. The capacity of this will stand increase by 36% to 3 lakhs mega MTA, and EPS will stand increase by 70% to 85,000 MTA. And then this OMC's companies like HPCL, BPCL, IOCL, it's likely to hike commercial gas cylinder price by 25 with immediate effect. And lastly, the Reliance Industries makes an amendment to its MOA to add infrastructure and construction related activities to its business services. So that's all from my end. I'll hand out to Prabhakar sir for more research updates. Thank you.